हाय फ्रेंड्स। तो अब हमने काफ़ी हद तक का चैप्टर ख़त्म कर लिया है 12th का। बायोटेक के बाद आपके पास एक गॉल्जी यूनिट रह जाएगी, तो 4 चैप्टर्स बचे हैं लास्ट के। इसके बाद हमारा 12th ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम 12th की क्वेश्चन सीरीज़ पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद 11th पे चलेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको पहले 11th की सीरीज़ चाहिए तो आप मेरे को वैसा बता देना। ठीक है, चलो यार शुरू करते हैं फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस तुमको थोड़ी देर का टेंशन पे करना है और चीज़ें तुमको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, और तुम आराम से। और बायोटेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर नीट। ठीक है, बस बायोटेक्नोलॉजी से ही तुमको अकेले 10-11 सवाल मिल जाएंगे नीट में, तो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। प्लीज़ ध्यान से कर लो, और बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं, बहुत ईजीली कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। और हम क्या क्या पढ़ेंगे आज? एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और एथिकल इशूज़। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। Biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants, and animals. The applications of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production. Three critical research areas of biotechnology are: Pella, providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme. Second, creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act. और तीसरा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तुमने पढ़ा था ना अभी लास्ट चैप्टर में कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस एकदम लास्ट में करते हैं। तुम्हारा फिर उसमें प्योरीफिकेशन और एक्सट्रैक्शन सेपरेशन ही होता है ना शायद से। हाँ, ओके। 10.1 Biotechnological applications in agriculture. Let us take a look at the three options that can be thought for increasing food production. पहला, agrochemical based agriculture. Second, organic agriculture. और तीसरा, genetically engineered crop based agriculture. देखो, the green revolution succeeded in tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population. Increased yields have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals, fertilizers, and pesticides. However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive, and further increasing in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding. ठीक है, चलो। As traditional breeding techniques fail to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture got developed. ठीक है, देखो, जब ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग प्रोग्राम था वो ठीक से मतलब एकदम टाइम से मैच करके, मतलब स्पीड को मैच करके नहीं अपना सफिशिएंटली हमको दे सका, तो हम टिश्यू कल्चर डेवलप करें। ठीक है, वो एक क्या तरीका था आप देखते हैं, आगे उसका आ जाएगा तुमको एक्सप्लेनेशन। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन? इट वाज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट्स। अब एक्स प्लांट्स क्या होते हैं? यानी कि एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, this capacity to generate a whole new plant from any cell और एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। देखो, एक्सप्लांट वो हो गया कि तुम्हारा कोई भी प्लांट का पार्ट जिसको हम लेकर के एक टेस्ट ट्यूब में एक स्टेराइल कंडीशन में ग्रो कराते हैं। ठीक है, अब इसी कोई एक्सप्लांट से हम अगर पूरा जनरेट कर देते हैं पूरा ही प्लांट, तो इस प्रोसेस को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, कि किसी भी सेल या एक्सप्लांट से हम पूरा प्लांट को रीजनरेट कर लें। ठीक है, चलो, you will learn how to accomplish this in higher classes. It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salts, vitamins, amino acids and growth regulators like oxygen, cytokine etc. मतलब इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसमें कार्बन सोर्स होना जरूरी है, जैसे कि तुम्हारा सुक्रोज, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होने जरूरी हैं, वाइटामिन, अमाइनो एसिड्स, और जो हमारे जो पीजीआर्स होते हैं, साइटोकिन, ऑक्सीजन, ये सब। ठीक है, चलो। By application of these methods, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in a very short duration. This method of producing thousands of plants through tissue culture is called micropropagation. ठीक है, अब तुमको समझ में आ गया। इस एप्लीकेशन से हम बहुत ही कम टाइम में काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इस मेथड से जो है ये, जिससे हम टिश्यू कल्चर को यूज़ करके हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोपगेशन बोलेंगे। ठीक है, each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown, that is, they are soma clones.
क्लोन्स क्या होते हैं? जो आइडेंटिकल होते हैं। क्लोन्स हम किसको बोलते हैं? अगर तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी करता है ऑर्गेनिज्म, तो जो उसकी कॉपीज, जो उसकी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्लोन्स होते हैं उसके, यानी कि एकदम आइडेंटिकल होते हैं हर फीचर में। सो वहाँ क्लोन्स बोला गया उन चीज़ों को, इसीलिए क्योंकि जो वो प्लांट जो बन रहे थे, जिस प्लांट का पार्ट लेके हमने उसको रीजनरेट किया, वो एकदम आइडेंटिकल बना उससे, इसलिए हम इसको सोमा क्लोन्स बोलते हैं। चलो, many important food plants like tomato, banana, apple, etc. have been produced on a commercial scale using this method. Try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to better understand and appreciate the process. Another important application of the method is the recovery of a healthy plant from diseased plant. Even if the plant is infected with a virus, the meristem, apical and axillary is free of virus. Hence, one can remove the meristem and grow it into in vitro to obtain virus-free plants. अब देखो, मेरिस्टेम तुम्हारा मेरिस्टेम क्या होता है? उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। मेरिस्टॉस का मतलब होता है जो डिवाइड करते रहे। मेरिस्टॉस इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है। वो तुम्हारे एनाटॉमी के उसमें पहले पैराग्राफ में इसका लिखा भी हुआ है मीनिंग। तो देखो, यानी कि अगर कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे जो तुम्हारा इन्फेक्शन है वो पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि वो फटाफट डिवाइड करके वो आगे बढ़ रहा है। तो अगर कोई प्लांट डिजीज्ड है तो हम उसको वायरस फ्री प्लांट कैसे रीजनरेट कर सकते हैं? उसका मेरिस्टेम उठाएंगे। मेरिस्टेम कहाँ होगा? हमेशा एपिकल पे होगा। एपिकल जो सबसे टॉप वाली टिप वाली चीज़ होगी, ठीक है। शूट एपिकल और रूट एपिकल, ठीक है। एपिकल एंड एक्सिलरी लिखा हुआ है, वो वायरस से फ्री होता है, क्योंकि मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो वायरस वहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं। वो फटाफट डिवाइड कर रहा है तो अपना वो फ्री रहता है, ठीक है। तो उससे उस मेरिस्टेम को हम लेकर के नया प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं, तो वो वायरस फ्री प्लांट हो जाएगा। यही इसका मतलब है। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटैटो एटसेट्रा। ये सब तुम ध्यान रखो। Scientists have been isolated single cells from plants, and after digesting their cell walls have been able to isolate naked protoplast surrounded by plasma membrane. Isolated protoplast from two different varieties of plants, each having desirable character, can be fused to get hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. These hybrids are called somatic hybrids, while the process is called somatic hybridization. मतलब कि मान लो टोमेटो का ले लिया और पोटैटो को ले लिया, आलू टमाटर का ले लिया, प्रोटोप्लास्ट हमने ले लिया, उसको फ्यूज करा दिया, तो जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और तुम्हारे प्रोटोप्लास्ट को बोल रहे थे ना शायद से, सॉरी हाँ, जो तुम्हारे हाइब्रिड्स बनेंगे उनको हम सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलेंगे, बस। और तुम्हारा मतलब जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर है उस प्लांट, मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट का, उसको लेकर के उसका प्रोटोप्लास्ट हम उसे फ्यूज करा देंगे। चलो, imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with that of potato, and then they are grown to form new hybrid plant combining tomato and potato characteristics. Well, this has been achieved resulting in formation of pomato. ठीक है। Unfortunately, this plant did not have all the desired combinations of characteristics for its commercial utilization. चलो, is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that the farmers may obtain maximum yield from their fields? Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that the harmful effects on the environment are reduced? Use of genetically modified crops is a possible solution. ठीक है, okay. Plant, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. GM plants have been useful in many ways. अब क्या क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो, जो क्रॉप्स बने होते हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस, यानी कि कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, इन सबको ज़्यादा टॉलरेट कर सकते रहते हैं जो नॉर्मल होते हैं उनसे। सेकेंड, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हो जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। ज़्यादा उन पर तुमको केमिकल पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। रेदर देन जो तुम्हारे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं ज़्यादा अफेक्ट जाते हैं, तो उन पर तुमको लगातार पेस्टिसाइड छिड़कने पड़ते हैं। चलो, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, increased efficiency of mineral uses by plants, this prevents early exhaustion of fertility of soil, enhanced nutritional value of food, example golden rice, जो कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस होती है, ठीक है। और ये तो बहुत बार PYQ में तुम्हारे, तो तुमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो, in addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest-resistant plants, which could decrease the amount of pesticide used. Bt toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis, यानी कि BT for short. Bt toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insect without the need for insecticides. In effect, created a biopesticide. Examples are BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato and soybean etc. अब पढ़ते हैं BT cotton के बारे में. Some strains of Bacillus thuringiensis produce
proteins that kill certain insects such as lepidopterans यानी कि टोबैको बडवर्म और आर्मीवर्म, और सिलेप्टेरांस यानी कि बीटल्स, और डिप्टेरांस यानी कि फ्लाइज और मॉस्किटो, इन सबको मार दे सकता है वो, ठीक है. Beta therinogenesis forms protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein. Why does this toxin not kill the bacillus? Actually, the Bt toxin protein exists in an as inactive protoxin, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut, which solubilize the crystals. The activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cells and create pores that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect. ठीक है, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको ध्यान रखना है कि देखो खुद क्यों नहीं मरता है उससे बैसिलस thuringiensis, क्योंकि उसके में इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है. लेकिन जब उसको कोई इंसेक्टिसाइड जब इंजेस्ट करता है तो क्या होता है, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट. ये ध्यान रखना, अल्कलाइन पीएच होता है, एसिडिक पीएच नहीं होता. अल्कलाइन पीएच ऑफ गट की वजह से वो एक्टिव हो जाता है और इसकी वजह से जो इंसेक्ट होता है वो मर जाता है. ठीक है. Specific Bt toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. The choice of genes depend upon the crop and the targeted pest, as most Bt toxin are insect group specific. मतलब वो सारे इंसेक्ट्स को नहीं मारते, कुछ स्पेसिफिक जो तुमने पढ़ा डिप्टेरांस, लेप्टोडेप्टेरांस, सिलेप्टेरांस, इन ग्रुप्स को मारते हैं वैसा. ठीक है, अब सारे ग्रुप्स हो जाएंगे सबको नहीं मार देगा, इसलिए स्पेसिफिक होता है. The toxin is coded by a gene Cry1AC named Cry. ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ देम. फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन Cry1AC एंड Cry2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म्स. और Cry2AB सॉरी, और जो Cry1AB होता है वो तुम्हारा कौन बोर्ड को करता है कंट्रोल. तो तुम ये जीन्स ध्यान रखना कौन सा किसको कंट्रोल करता है. Cry1AC और Cry2AB कंट्रोल्स द कॉटन बॉलवॉर्म्स एंड Cry1AB कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर. ठीक है, देखो कॉटन बॉल ए डिस्ट्रॉयड बाई बॉलवॉर्म, तुम ये देख सकते हो डिस्ट्रॉय हो गया है, और ये फुली मैच्योर कॉटन बॉल है, सफ़ेद सफ़ेद पूरा कॉटन बन गया है. चलो अब देखते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. हाँ, several nematodes parasites a wide variety of plants and animals including human beings. A nematode Melidogyne incognitia infects the roots of tobacco plants and causes a great reduction in yield. A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference. प्लीज़ रिमेंबर, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करती जाऊँगी, तुम उनको ध्यान रखना. ठीक है, अब RNA interference takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. This method involves silencing of specific mRNA due to the complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents translation of the mRNA, जिसकी silencing की जा रही है. Source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genomes or mobile genetic elements यानी कि transposons that replicate via an RNA intermediate. Using agrobacterium vectors, nematode-specific genes were introduced into the host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells. The two RNAs being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initiates RNA interference and thus silenced the specific mRNA. ठीक है, mRNA पे जब साइलेंस देखो डबल स्टैंडर्ड हैं तभी तो वो साइलेंस कर पाएंगे ना mRNA को, नहीं तो अगर सिंगल स्टैंडर्ड होता तो फिर तुम्हारा प्रोटीन कोड हो जाता, तो फिर जो चीज़ें थी वो अफेक्ट कर देता है उसको. तो इसलिए तुम्हारा जो DsRNA यूज़ होता है, तुमको ये चीज़ें लॉजिक से याद रखनी है कि सिंगल स्टैंडर्ड था, डबल स्टैंडर्ड था, ऐसे याद रखो. डबल स्टैंडर्ड है तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री है और उसने ऐसे मतलब डबल वो बना लेगा. ठीक है, वो जुड़ जाएगा और इसकी वजह तभी तो mRNA तुम्हारा वो हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा. ठीक है, अगर सिंगल स्टैंडर्ड होता तो जाके mRNA को वो कोड देता और उसके बाद प्रोटीन कोड हो जाता तुम्हारा, तो वो होने से बच गया, तो ये साइलेंस हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक mRNA. ठीक है, ऑफ द नेमाटोड. द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव in the transgenic host experienced specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. देखो फोटो देख लो तुम. Host plant generated double-stranded RNA triggers protection against nematode infestation. पहला देखो ये जो डायग्राम में तुम्हारा रूट ऑफ ए टिपिकल कंट्रोल प्लांट, देखो ये देखो बन रखे हैं वो, और ये देखो ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवेल मैकेनिज्म. ये प्रोटेक्ट हो गया था, पहले अफेक्टेड था, बाद में प्रोटेक्ट हो गया था. ठीक है, अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन. The recombinant DNA technological process have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses as is common in case of similar products isolated from non-human source.
At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use world over. In India, 12 of these are presently being marketed. मतलब कि पूरे वर्ल्ड में 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स जो होते हैं अप्रूव हो चुके हैं ह्यूमन यूज़ के लिए, लेकिन इंडिया में सिर्फ अभी 12 हैं जो मार्केट हो रहे हैं. ठीक है, मार्केट में प्रेजेंट हैं अभी. चलो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करते हैं. Management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular time intervals. What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals. Would the insulin isolated from other animals be just as effective as that secreted by the human body itself? And would it not elicit an immune response in the human body? Now, imagine if bacterium were available that could make human insulin. Suddenly, the whole process becomes so simple. You can easily grow a large quantity of bacteria and make as much insulin as you need. Think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not, or why. ठीक है, अब तुम इसका आंसर खोजो. चलो मैं बता देती हूँ. इंसुलिन जो है तुम उसको ओरली नहीं ले सकती, क्योंकि जो इंसुलिन है उसको जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सब उसको डाइजेस्ट कर देंगे. चलो, insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs. Insulin from an animal source, though, caused some patients to develop allergy or other types of reactions to the foreign protein. Insulin consists of two short polypeptide chains, chain A or chain B, that are linked together by disulfide bridges. तुमको ध्यान रखना कि मैच्योर इंसुलिन में कौन कौन से बस दो ही चेन्स होते हैं, एक चेन ए एक चेन बी. ठीक है, और कैसे लिंक होता है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से. चलो, in mammals, including humans, insulin is synthesized as a prohormone. Like a proenzyme, the prohormone also needs to be processed before it becomes a fully mature and a functional hormone, which contain an extra stretch called C-peptide. ये देख लो तुम्हारा प्रोइंसुलिन में ये तुम्हारा चेन C है, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है. ठीक है. The C-peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin. The main challenge for production of insulin using rDNA techniques was getting insulin assembled into a mature form. In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them into the plasmids of E. coli. And to produce insulin chains, chain A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form ह्यूमन इंसुलिन. ठीक है, ये ध्यान रखना किसने किया था, एली ने वो बनाया था. और कहाँ कब बनाया था, 1983 में. अलग अलग स्ट्रैंड्स बनाए थे, फिर उसको डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ दिया था. चलो, जीन थेरेपी. If a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such disease? Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods that allows correction of gene defect that has been diagnosed in child or embryo. Here, genes are inserted into a person's cell and tissues to treat a disease. Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function and of and compensate for the non-functional gene. The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. ठीक है, this enzyme is crucial for the immune system to function. The disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. But the problem with both of these approaches is that they are not completely curative. As the first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA complementary DNA using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, the patients require periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the genes isolated from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, it could be a permanent cure. तो permanent cure कब होगा, जो उसको early embryonic stage में ही उसमें क्या कहते हैं, जो उसका marrow cells है जो ADA प्रोड्यूस कर रहा है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए उसके बॉडी के अंदर. ठीक है, तो वरना ये क्यूरेटिव नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं हमको हर पीरियड्स पे उसको बार बार इंजेक्ट करना पड़ता है उनको. ठीक है, क्योंकि हम उसको बॉडी के आउटसाइड ग्रो करते हैं. चलो 10.2.3 मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. You know that for effective treatment of a disease, early diagnosis is and understanding its pathophysiology is very important.
Using conventional methods of diagnosis, serum and urine analysis, etc., early detection is not possible. Recombinant DNA technology, PCR, enzyme-linked immunosorbent tests यानी कि ELISA are some of the techniques that serve the purpose of early diagnosis. Presence of pathogen यानी कि bacteria virus is normally suspected only when pathogen has produced a disease symptom. By this time, the concentration of pathogen is already very high in the body. However, very low concentrations of bacteria or virus at a time when the symptoms of a disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. Can you explain how PCR can detect very low amounts of DNA? अभी तुम कल पढ़ के आए हो, उसमें कैसे होता है कि वो एम्पलीफाई करता है तो एक से तुम्हारा 1 बिलियन कॉपीज बन जाते हैं. ठीक है, चलो उसकी प्रोसेस क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और फिर एक्सटेंशन. चलो, PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patients. It is being used to detect mutations in genes in suspected cancer patients too. It is a powerful technique to identify many other genetic disorders. A single-stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule, the probe, is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells, followed by detection using autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene. ELISA is based on the principle of antigen-antibody interaction. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigens यानी कि protein, glycoprotein, etc. और by detecting the antibody synthesized against the pathogen. तो ये दोनों से काम करती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से. और क्या क्या करती है, या तो फिर एंटीजन के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेती है, नहीं तो एंटीबॉडी जो सिंथेसाइज करते हैं अगेंस्ट पैथोजन जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती है उससे डिटेक्ट कर लेती है. तो दोनों से करती है, इसका ध्यान रखना. चलो, और इसका प्रिंसिपल याद रखना कि क्या है उसका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. चलो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पॉजेस एंड express an extra gene are known as transgenic animals. Transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cow, fish have been produced, although over 95% of all existing transgenic animals are mice. तो 95% से ज़्यादा कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स है? तुम्हारे चूहे, क्योंकि सब कुछ हम चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. वाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड? हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशंस? कैसे कर सकते हैं? अगर उस पर टेस्ट करेंगे दवाइयों का और हर चीज़ों का, हमको पता चलेगा कि ह्यूमन यूज़ के लिए क्या ज़्यादा बेहतरीन है. तो ये इस तरीके से हम चूहे को अपना वो बना के काम करते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस काफ़ी मिलते हैं. चलो ठीक है, जो उसके पे दिखाता है रिजल्ट वो हम पे भी दिखाएगा. चलो, लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ कॉमन रीजंस. Normal physiology and development. Transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal function of the body and its development. Example, study of complex factor involved in growth such as insulin-like growth factor. By introducing genes from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result, information is obtained about the biological role of the factor in the body. Study of diseases. Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease. These are specially made to serve as models for human diseases so that the investigations of new treatment for disease is made possible. Today, transgenic model exists for many human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's. तीसरा, biological products. Medicines required to treat certain human disease can contain biological products, but such products are often expensive to make. Transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of the portion of the DNA or genes which code for a particular product, such as human protein alpha-1 antitrypsin used to treat emphysema. ठीक है, एक तो ये ह्यूमन प्रोटीन है, उसके बाद कौन सा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो कि किसको ट्रीट कर रहा है? एम्फाइजेमा को ट्रीट कर रहा है. ये सब तुमको याद रखना. ये भी बहुत बार पूछा हुआ PYQ है, CETs में भी और तुम्हारा उसमें भी क्या कहते हैं नीट में. तो ऑब्वियसली similar attempts are being made for treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. In 1997, the first transgenic cow, Rosie, produced human protein enriched milk 2.4 grams per liter. The milk contained the human alpha-lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk. चौथा, vaccine safety. Transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccines before they are used on humans. Transgenic mice are being used to test the safety of the polio vaccine. If successful and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine.
Fifth, chemical safety and testing. This is known as toxicity or safety testing. The procedure is the same as that used for the testing toxicity of drugs. Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. They are then exposed to toxic substances and the effect is studied. Toxicity testing is such and in such animals will allow us to obtain result in less time. 10.4 Ethical issues. The manipulation of living organisms by the human race cannot go any further without regulation. Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organisms. Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such things is also important. Genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced in the ecosystem. Therefore, the government has set up organizations such as GEAC, यानी कि Genetic Engineering Approval Committee, which will make decisions regarding the validity of GM research and the safety of the introducing GM organisms for public services. The modification or uses of living organisms for public service as food and medicine source, for example, has also created problems with patent granted for the same. There is growing public anger that certain companies are being granted patent for products and technologies that make use of the genetic materials, plants, and other biological sources that have long been identified, developed, and used by farmers and indigenous people of a specific region or country. Rice is an important food grain, the presence of which goes back thousands of years in Asia's agricultural history. There are an estimated 200,000 varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. Basmati rice is distinct for its unique aroma and flavor, and 27 documented varieties of basmati are grown in India. There is a reference to basmati in ancient text, folklore, and poetry, and it has been grown for centuries. In 1997, an American company got patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office. This allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmers' varieties. Indian basmati was crossed with semi-DOF varieties and claimed as an invention or a novelty. The patent extend to functional equivalents, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. Several attempts have also been made to patent uses, products, and processes based on Indian traditional herb medicines, example turmeric, neem. If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other countries or individuals may encash our rich legacy and we may not be able to do anything about it. तो हमको बहुत जागरूक रख के अपना चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये सब ठीक है. Biopiracy is a term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. ठीक है, मतलब किसी की चीज़ को चुरा लिए, ना उसका पेमेंट किए ना उसकी परमिशन लिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोपायरेसी. Most of the industrialized nations are rich financially but poor in biodiversity and traditional knowledge. In contrast, the developing and the underdeveloped world enrich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources. Traditional knowledge related to the bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort, and expenditure during their commercialization. There has been growing realization of the injustice, inadequate compensation, and benefit sharing between developed and developing countries. Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. The Indian Parliament has recently cleared the Second Amendment of the Indian Patent Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiative. यहाँ तुम्हारा चैप्टर हुआ खत्म और देखते हैं अब समरी. चलो. Biotechnology has given to humans several useful products by using microbes, plants, animals, and their metabolic machinery. Techniques of tissue culture and somatic hybridization offer vast potential for manipulation of plants in vitro to produce new varieties. Recombinant DNA technology has made it possible to engineer microbes, plants, and animals such that they have novel capabilities. Genetically modified organisms have been created by using methods other than natural methods to transfer one or more genes from one organism to another, generally using techniques such as recombinant DNA technology. GM plants have been useful in increasing crop yields
reduce post-harvest losses and make crops more tolerant of stresses. There are several GM crops planted with improved nutritional value of food and reduce the reliance on the chemical pesticides यानी कि pest resistant crops बन गया वो. Recombinant DNA technology processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutics. Since the recombinant therapeutics are identical to human proteins, they do not induce unwanted immunological response and are free from risk of infection, as was observed in case of similar products isolated from non-human sources. ये देखो, इसको ध्यान रखना. Since the recombinant therapeutics are identical to human proteins, they do not induce unwanted immunological responses and are free from risk of infection, as was observed in case of similar products isolated from non-human sources. ठीक है? Human insulin is made in bacteria, yet its structure is absolutely identical to that of the natural molecule. Transgenic animals are also used to understand how genes contribute to development of disease by serving as models for human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's. Gene therapy is the insertion of genes into an individual's cell and tissue to treat diseases, especially hereditary diseases. It does so by replacing a defective mutant allele with a functional one, or gene targeting, which involves gene amplification. Viruses that attack their host and introduce their genetic material into the host cell as part of the replication cycle are used as vectors to transfer healthy genes, or more recently, portion of genes. The current interest in the manipulation of microbes, plants and animals has raised serious ethical questions. खत्म हो गया. ठीक है, चलो अब तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अब मिलेंगे हम इकोलॉजी यूनिट के साथ. और तुम्हारे कुछ भी रिव्यूज़ होंगे, तुम्हारे कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज होंगे तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना. आई आंसर दैट. तब तक के लिए पढ़ते रहो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो यार, और दोस्तों को भी शेयर कर देना. चलो, बाय बाय.